feel that you have to ask any question, you can stop me then and there, and you can ask the questions from me also. There is no problem. So starting from or coming from the topic that is gender and law, you see that I have to deliver 2 lectures today on this very topic. So I'll be dealing with the topic that is gender and law to explain and what is understood as gender and what is the law, and then gender and law together. And further, you say I'll be discussing with you the topic broadly in 3 parts: the international concept, international law and gender rights and gender issues, then the national law, and that national law is further divided, one in the constitutional law and other on the statutory law. And thirdly, I'll be discussing with you the judicial attitude or judicial approach on the gender rights, gender equality, and what is the judgments which have been delivered by the Indian judiciary to uphold the rights of the equality of the genders. So I'll also discuss in the last part, that is relating to some of the current issues on the same-sex marriage and the rights of the LGBT as the gender. So my focus will be on the international regime, the national regime that is related to the gender and law, and the judicial approach along with the current situations on which the gender is now being highlighted. First of all, when we talk about the gender, then simply if we go by the explanation, I'm not going by the definition because there are many definitions, and because you people are not belonging to the discipline of law, I've seen that only one participant is from the field of law, others are from different disciplines and different regimes. So to understand that what is a gender kya hai apne aap mein, so we find that gender is a social construct which allocates the roles and responsibilities, which allocates the duties and rights of men and women. So gender kya hai apne aap mein? This is not a biological phenomena which is related to the sex. So here the topic is gender, so we have to confine ourselves on the gender. So gender is a social construct which is related to the rights and duties of the men and women, which relates with the roles and responsibilities which a man or a woman has to perform. But you see that this gender is not confined only to the first gender or the second gender. This is also consisting of the third gender, because of the judgments of the Supreme Court, which has allowed some of the rights, जो उनको rights दिए गए हैं, जो उनको acceptance दी गई है, और उस acceptance के साथ साथ उनको जो law भी बनाए गए हैं for equality. So there are 3 genders basically. The first gender, which is known as the male, second gender, which is known as the female, and the third gender, in which there are a lot of categories like LGBTQIA+++. So बहुत सारे ऐसे categories हैं जिसको कि हम third gender में देखते हैं. But basically जो एक concept है, जो एक perception है, that is related to the gender in terms of the female, gender in terms of the equality, in terms of the gender equality. So we find that almost all the laws, whether it is at the international level or national level, they are filled up with all these rights of equality towards the male and female. So gender basically, as I told you, is a social construct. It's not a biological construct. जहां पर समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पर ये पदवी दी जाती है मेल एंड फीमेल की, मैन एंड वुमेन की, और उनके जो राइट्स हैं, उनके जो ड्यूटीज हैं, उनके जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके जो रोल्स हैं, उनको बांटा गया, उनको एलोकेट कर दिया गया है कि महिला है तो वो ये काम करेगी, पुरुष है तो वो ये काम करेगा, महिला पुरुष का काम नहीं कर सकती. सो दिस इज समथिंग लाइक some old traditions, some social conditions which are related with the term gender.
And gender identity, as I told you, is not confined to a binary. Binary, that means girl or women, boy or men. Third gender is also there. And it is not static in terms because it exists along with a range that can change over the time. And a person can identify at any point of time outside this entirely. जो अभी आप देखते हैं कि किसी भी घर में जब बच्चा पैदा होता है, then at that time it is decided, it is seen that the baby is born, that is a girl or the boy. If there is no gender, then it is third gender. But if a girl or a boy that borns, जो पैदा होता है, उसके बाद भी वो किसी भी stage पर when he feels that the harmonical changes are there, then there are different changes in the society, the changes of his perception, तो वो उस समय भी अपने इस आइडेंटिटी को, जेंडर आइडेंटिटी को इस बाइनरी फॉर्म से गर्ल एंड बॉय, वुमेन एंड मैन, मेल और फीमेल, कैन take out from that entirely. Outside, one can go outside of it entirely, and for that we have the law in 2019. So a person himself or herself may identify at any point within this spectrum or outside of it entirely. Whether the person wants to be within the male and female binary or want to go outside of this male and female binary. And when the person decides to go outside this, then it becomes the case of the third gender. So people may identify with genders that are different from their natal sex. जिस समय वो पैदा होते हैं उस समय जो उनका biological sex होता है, तो उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद वो अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं. And these identities may include the transgender, the non-binary or gender neutral. So gender in terms of the explanation is a social contract which is not confined to the binary division of male and female. At any point of time, a person can identify himself or herself to belong to other category than this binary division. This is gender. तो ये क्या है अपने आप में gender है. Then come to the law as to what is law in general terms. So when we talk about the law, then a law is generally a body of rules which have been laid down for determining the legal rights of the persons concerned, the legal obligations of the person concerned, and those legal rights and those legal duties and obligations must be recognized by the courts. तो लॉ क्या है अपने आप में? लॉ जो है एक रूल्स हैं, एक बॉडी ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अलग अलग तरीके के हम उसको नाम देते हैं. वो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, वो नोटिफिकेशंस होते हैं, वो हर तरीके की जो रूल्स हैं जिसके थ्रू कोई गवर्न होता है और जिससे किसी व्यक्ति के राइट्स की बात होती है, उनकी ड्यूटीज की बात होती है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what are those rules combinedly, they must be recognized by the court. So these in simple terms are known as law. Law की जो सीधी परिभाषा है वो सिर्फ ये है कि वो कुछ रूल्स होते हैं जो हर किसी पर बाइंडिंग हो सकते हैं और वो बाइंडिंग होने के लिए एक की ड्यूटी दूसरे का राइट, तो इस तरीके से जो ऑब्लिगेशंस और राइट्स को डिटरमिन करते हैं और साथ ही साथ वो कोर्ट के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है. मतलब ये कि लॉ बनाने के लिए जरूरी है दैट द अथॉरिटी मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. For example, if we talk about India, then we find that the competent authority to make the rules and the law is the parliament for nation at the central level, and the state assemblies are for the state level. तो state level के लिए भी law बनाया जाता है, central level के लिए भी law बनाया जाता है. लेकिन कई बार आप देखते हैं कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी लॉ बनाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में लॉज बनाए जाते हैं. तो वो क्या रूल्स और रेगुलेशंस की कैटेगरी में आते हैं और उनको ये कॉम्पिटेंसी कहाँ से मिली है? पार्टिकुलर किसी एक्ट से मिली है जिससे वो एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें उनको ये पावर दी गई है.
तो जहां भी वो रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं, द बेसिक पर्पस इज जस्ट दैट टू गवर्न द कंसर्न बाय that rules, and those rules are to determine the rights and duties of the persons who are working with them or who are under them, and those rules and regulations are to be recognized by the court of law. कोर्ट में उसको recognition मिलना जरूरी है. Recognition in the sense that if somebody is saying that this is my right and this is given under a particular rule, so whether that rule is constitutional or not, the court will decide for that. और जब कोर्ट उसको डिसाइड करेगा ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, देन इट बिकम्स द लॉ. सो मेनली वी फाइंड दैट द लॉ have some sources also. जैसा कि मैंने एक सोर्स बताया आपको, पार्लियामेंट बना रही है या स्टेट असेंबलीज बना रहे हैं, but there are some other rules also, there are some other regulations also, there are certain parameters also which have also taken the shape of law. उन्होंने भी लॉ की शेप ली हुई है. फॉर एग्जाम्पल कस्टम, अगर हम कस्टम की बात करते हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, तो कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जिनको कि लॉ में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, और वो कस्टम्स कंटिन्यूअसली एक बहुत लंबे समय से इन परपीचुटी जिसको हम कहते हैं, दीज कस्टम्स आर बीइंग enforced in perpetuity, they are certain, they are for the benefit of the community, then those customs are also having the shape of law. तो वो भी लॉ की तरीके से माने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल if I give you the example like सप्तपदी. सप्तपदी आपने सुना है, जब हिंदूज की मैरिज होती है तो अग्नि के तरफ जो 7 फेरे लगाए जाते हैं उसको सप्तपदी कहते हैं. वो एक कस्टम था, लेकिन उस कस्टम को लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है. सो नाउ इट हैज बिकम द लॉ. सो कस्टम इज द सोर्स ऑफ लॉ. देन लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन एज आई टोल्ड यू, तो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट या स्टेट बना रहा है और उसमें किसी भी तरीके के जो लॉ बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. तो ये क्या है? अपने आप में लेजिस्लेशन है. Then another source is the constitution, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, which is known as the supreme law of the land. Every law which has to be drafted, enacted, that has to fulfill, that has to satisfy the conditions which are given in the constitution. तो constitution जो है वो हमारा एक क्या है? एक लॉ का सोर्स है. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसमें देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, दैट इज वन ऑफ द राइट विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन. राइट टू freedom of speech and expression, right to vote, right to move anywhere in the country, right to personal liberty, right to life. तो इस तरीके के जो rights दिए गए हैं वो सब क्या हमें मिल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. Then another source is the international conventions. जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ conventions हैं, कुछ declarations हैं, तो वो भी हमारा लॉ का बेसिकली हम उसमें भी अपना लॉ को पाते हैं सोर्सेस की तरीके से. अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे सीडो का नाम अगर आप लोगों को सुना हो, जो कन्वेंशंस अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो महिलाओं के विरोध में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए, इसको लेके इंटरनेशनल कन्वेंशंस बने हैं. तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस आर आल्सो वन ऑफ द सोर्स. एंड देन फाइनली द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जो न्यायिक निर्णय हम जिसको कहते हैं कि जुडिशियरी जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने अपने डिसीजंस दिए, तो वो डिसीजंस जो देते हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग इफेक्ट रखता है. तो जो बाइंडिंग इफेक्ट है ना, उसको प्रेसिडेंट पूर्ण निर्णय की तरीके से हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो विशाखा का एक केस आया था, एंड इस विशाखा के केस में कुछ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे. तो जितनी भी मुझे लगता है यहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं या मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट this Vishakha guidelines, because after this decision of the Supreme Court, every university, because I'm talking in terms of the university system or the college system, तो हर कॉलेज में या हर यूनिवर्सिटी में जहां पर भी है वहां पर एक कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया,
आईसीसी के नाम से, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जहां पर कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट की कोई घटना होती है इंस्टीट्यूशन में तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है. एंड all the guidelines were given in this विशाखा के. So this is like a judicial precedent. पूर्व निर्णय है, ये भी अपने आप में लॉ का सोर्स होते हैं. So this decision was of 1997 and later on in 2013 the law was also enacted, the prohibition, redressal and prevention of sexual harassment of the working women or women at workplace act. तो ये भी एक एक्ट आ गया अपने आप में, स्टैट्यूटरी जिसको हम कहते हैं. So the two things which are now may be clear to you. One is that gender, it's a social construct, and law, that is the rules framed by the competent body, which are determining your rights and obligations, and those are recognized by the court of law. Now, there are sources, as I told you, the customs, the legislations, the constitution, and judicial precedents, as well as the international instruments that may include the international treaty, international conventions, international declarations. So whatever are there, those are the sources through which we can get that these are the laws which are binding on the parties concerned. तो जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो वहां पर ये होता है कि जो कन्वेंशंस हैं, अगर इंडिया उसकी पार्टी है, इंडिया ने उसको सिग्नेचर किया है, इंडिया उसकी सिग्नेटरी है, then it is binding, otherwise it's not binding on the country. तो यहाँ पर केवल एक ये प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ कि अगर इंडिया ने उसको रेटिफाई किया है, सिग्नेचर किया है, तब तो हमारे ऊपर लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा. बट सीडा, एज आई एम टॉकिंग, इंडिया इज अ सिग्नेटरी एंड इट हैज रेटिफाइड ऑल्सो. Now the next term which is important for this discussion is a combined relation between the gender and law. कि gender और law जो है दोनों, इनको इसके intersection को, because gender and law, that refers to the intersection of the legal principles and policies with the issues related to the gender. ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है कि इसमें हमें ये भी देखना है कि लॉ क्या है, इसमें हमें ये भी देखना है कि वो जेंडर को किस तरीके से सेक्ट कर रहा है. सो दिस इज रेफरिंग टू द इंटरसेक्शन of the law, the principles, policies and legislation with many issues which are related to the gender. So this includes the gender identity, it also includes the gender expression, some sex-based discrimination also are the part of the gender and law. तो जब हम जेंडर और लॉ की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें किन किन चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन है जेंडर आइडेंटिटी का. दूसरा क्वेश्चन है कि हम उसमें सेक्स बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है कि महिला है तो या एलजीबीटी के ग्रुप में आता है तो, या वो मेल है तो उसके साथ किसी तरीके का सेक्स के ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, then this would be a part of the discussion on this gender and law issues, because it involves the study, it involves the analysis, and it also involves the application of laws, application that affects the individuals based on their gender. किसके ऊपर कौन सा लॉ लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा. So this is all the part of the discussion of this gender and law. And it will also be having some issues relating to what are the legal frameworks that are aimed for promoting the equality, which are for addressing the gender-based disparities, gender-based discrimination, sex-based discrimination. तो कौन कौन सी वो सब चीजें हैं जिसको कि हम इस जेंडर एंड लॉ में डिस्कस कर सकते हैं, वो अपने आप में एक पॉइंट बनता है इसका डिस्कशन का. Then this concept of gender that encompasses, as I told you, the roles, behaviors, activities, and attributes. Attributes that a particular society considers appropriate for men and women. घर में रह के महिलाओं को काम करना है घर का, बाहर जाके पुरुष को घर के लिए रोटी अर्निंग करनी. So these are the few roles which have been allocated in the society to male and female. So these attributes are the point of discussion for gender and law, because this may at some point of time may lead
to sex-based disparities, sex-based discrimination, which are basically known as the gender disparities and gender inequalities, which are resulting into gender injustice. So there are men and women, there are people, and there are gender identities, different gender identities in terms of their physical interface, in terms of their physiological interface, and the differences between male and female. So all these refer to a question of gender as well as what law is made for them. So for that, we have to discuss first of all these few attributes, these few aspects which are related to the gender and law. So first of all, because there is a wide range of issues, so I'll be confining myself only to few issues which are related to gender and law. For example, gender equality. So in that gender equality, we find that laws are formulated just to eliminate the discrimination which are based on the gender. And laws are also to promote equal rights and opportunities. दो चीजें हैं इसमें. एक तो ये कि जेंडर इक्वालिटी में लॉज जो बनाए जा रहे हैं, वो फर्स्ट थिंग व्हाट द लॉ विल डू दैट it will formulate the law in such a way so that the discrimination may be eliminated. This is one thing, positive action. And secondly, the law will also be made in such a term that it may promote the equal rights and opportunities for all the genders. So this is something which we find that in order to get gender equality, laws must be formulated, laws must be made. Laws को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस को, डिस्टिंक्शंस को एलिमिनेट करें, समाप्त करें जो जेंडर बेस्ड हैं, और साथ ही साथ इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज सभी जेंडर्स के लिए उनको देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए भी लॉ बनाए. सो दिस इंक्लूड्स द लॉज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, law related to the education, law related to the health care, and also related to the political participation. तो basically किसी को एक अच्छी लाइफ जीनी है और उसको कोई जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए जो लॉज बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली उसके एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसकी एजुकेशन को लेके, उसकी हेल्थ को लेके, और उसके जो एक पॉलिटिकल और एक जो सोशल पार्टिसिपेशन है उसको लेके law बनाए जाते हैं. And through this we can find that if these laws have been enacted, formulated by the competent bodies, then of course they'll promote the equal rights and opportunities for all the genders. Then second thing which is very much related to the gender, that is gender-based violence. Everybody knows that this violence on the basis of gender is very much in prevalence. Before birth and after death, every time you'll find that there are violences against the women particularly. कि पैदा होने से पहले भी वो सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम पे जिसको हम कहते हैं किलिंग ऑफ द फिटस इन द वोम, और दूसरा जो है कि मरने के बाद भी, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हैव सीन सम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड पार्टिसिपेंट्स आर हियर फ्रॉम द कर्नाटका आल्सो. तो बहुत अभी मई में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था वेयर अ मैन, ही वाज जस्ट 27 or 28 year old, and he has killed a गर्ल ऑफ 23 years. 23 साल की एक लड़की थी, अपने कॉलेज से वापस आ रही थी, उसको उसने पकड़ा, उसकी गर्दन काटी, उसको मार डाला, एंड आफ्टर कमिटिंग दैट मर्डर he did rape with the dead body. So this violence which is based on the gender is every time against the woman, whether she has taken the birth or not, or whether she is died. तो मरने के बाद और पैदा होने से पहले. So this is the reality which we find, which is based on the gender. So gender-based violence, that is very crucial to understand that why it happens and what are the legal frameworks
that are there, which have been established to prevent and which are there to address the violence and abuse which are based on the gender, such as the domestic violence, maybe their sexual assault, maybe their harassment, maybe their human trafficking, maybe their rape. So there are different types of the violence which women faces during her lifetime, during her before her birth and after her death even. So this is a cycle which continues, and this gender-based violence is also very important issue for discussion in this gender and law records. Then related to family law, this is also one of the very important aspect which we need to discuss in gender and law. And you all, as one of the citizen of the country, you must be aware that this time and there are issues which are related to the Uniform Civil Code, UCC, Uniform Civil Code बनाया जाए उसको लेके. So the issues relating to family laws, the laws govern various aspects which are related to the family relationships, which includes the marriage, divorce, the child custody, adoption, inheritance. So mainly अगर हम family law में बात करते हैं, तो because India is a secular nation, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, और वहां पर अगर हम देखते हैं तो हर धर्म को अपनी तरीके से उसको प्रोपगेट करने की एक फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला हुआ है. एंड फैमिली लॉ की जब हम बात करते हैं, हिंदूज आर हैविंग देयर ओन लॉज, मुस्लिम्स आर हैविंग देयर ओन लॉज. So these laws basically govern the matters which are related to the family relationship, जो उनके आपस में जो रिलेशनशिप है उसको लेके करते हैं, चाहे वो उनकी मैरिज से हो, डिवोर्स से हो, एडॉप्शन को लेकर भी होती है, उनकी सक्सेशन को लेके है, ये सारे इश्यूज हैं. सो दीज लॉज में have a great impact on the gender roles and gender rights, gender responsibilities within the families. What women is getting after the death of the parents, what the women is getting after the death of the husband, after the death of the son, क्या मिल रहा है उसको सक्सेशन में, क्या वो एडॉप्शन में बच्चे को गोद ले सकती है, नहीं ले सकती है, डिवोर्स के लिए क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, मैरिज के लिए उसकी कंसेंट जरूरी है या नहीं. सो there are many issues which are related to the gender in the matters of the family law also. This is also one of the discussion matter in the this records of gender and law. Then रिप्रोडक्टिव राइट्स एक और नया इशू जो एक निकल कर आ रहा है. एडॉप्शन पहले हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ बिकॉज ऑफ दिस advancement in the medical sciences and technology, everything now one can go for the ART, that is artificial this artificial reproductive techniques, so that reproductive rights are also made available. So what are the legal issues related to the reproductive health, the contraception, the abortion, the assisted reproductive technologies which are known as the ART. तो कानून बना दिया गया 2022 में. We have two legislations, one is on the ART and other on the surrogacy also. So this is also to be considered within the context of the gender and law. Then gender identity and gender expression. This is a very important issue which we can discuss in the in this gender and law, because the laws which are related to the gender identity or gender recognition, because legal gender recognition processes, it may have the name changes, it may have the sex changes, and the protections against the discrimination which are based on the gender identity or expression. They are the important aspects of the gender and law. कि किसमें अगर सेक्स चेंज किया गया है, ट्रांससेक्सुअल हो गए हैं, इंटरसेक्स हो गए हैं, जो LGBT के बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो उसमें फिर नाम चेंज किया गया है, उसके आधार पर किस तरीके से उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. सो ऑल दीज एक्सप्रेशंस रिगार्डिंग जेंडर आइडेंटिटी आर द इश्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर एंड लॉ. Then regarding the employment is also a very important factor, which are which is encompassing various issues like payment issues, salary issues. Gender and law
you see that in many cases you find that the female who is working, I'm just talking of the unorganized sectors. I'm talking of those sectors where which are not coming under the government institutions. I'm not saying that a teacher who has been appointed as the assistant professor in a university, female is getting lesser salary than the male counterpart in the same institution as the assistant professor. No, it's not like that. वहां तो हमने इक्वालिटी को अचीव किया है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहां पर लेबर्स हैं, तो क्या वहां पर डिस्पैरिटी हो रही है? क्या उनको जो इक्विटी होनी चाहिए वर्क प्लेस पे वो पेमेंट उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दैट अ ड्राइवर, अगर आपने अपना व्हीकल रखा है और व्हीकल के साथ साथ आपने एक ड्राइवर भी अपॉइंट किया, और उस ड्राइवर को आप देखें कि आप महीने की सैलरी उसको, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू आर देयर। लखनऊ की अगर हम बात कर रहे हैं तो 15,000 से लेके 18,000 तक का पेमेंट महीने का हम अपने एक ड्राइवर को दे देते हैं। क्या काम है? हमें ले जाएगा अपने घर से और हमारे वर्क प्लेस पे छोड़ेगा, और शाम को हमारे वर्क प्लेस से हमें घर पर लेके आएगा, या उसके बीच में एक आध चक्कर अगर कहीं लगाना। दिस इज द वर्क ऑफ द ड्राइवर. But if you take the example of the work that is maid lady at the workplace, अपने घर में जो हम housemaid लगाते हैं, whether we pay 15,000 or 18,000 to that lady also, who is also working for 3-4 hours continuously doing all the jobs. So you see that this payment disparity, the salary disparity at the workplace, discrimination, this is one of the issue which is also being encompassed in the discussion of gender and law, because this is related to the unorganized sectors basically. So there are issues of this pay equity, workplace discrimination, sexual harassment is also there, maternity and paternity leave. हम सरकारी नौकरियों में है, मैटरनिटी लीव भी मिलेगी, पैटर्निटी लीव भी मिलेगी, लेकिन जहां पर सरकारी नौकरियां नहीं है, जहां पर वो कानून लागू नहीं हो रहे हैं, सो वेदर दे आर गेटिंग द मैटरनिटी लीव और नॉट, and what are the workplace policies that affect the individual which are based on the gender. So labor rights and the employment, these are few issues which are very important discussion under this gender and law, because gender is a concept which is not confined only to the government sectors. That is something which is related to the non-governmental organizations, unorganized sectors also. So there, whether they are getting the proper rights, they are getting their proper, they are performing their proper duties, they are being discriminated or not, that is also one of the issue for discussion. Then at international level, we find that international human rights laws are there, which are related to the gender and law, and these are very significant and important realm of considering the international human rights as the international legal instruments which are addressed towards the gender-based discriminations and violence, which promote the gender equality, that promote and protect the rights of the women, rights of the girls, and the other marginalized genders also. So we find that this interpretation and implementation of the gender-related laws, that may vary across jurisdictions, which is reflecting through their cultures, which is reflecting the social context, which is reflecting on the political context, and also on the legal context. हम इंडिया में हैं, हम इंडियन लॉज की बात कर रहे हैं. If you think that the similar laws are there in the other countries also, you'll find that they have different laws and they have the different set of laws for the women at their places. So there are different issues which need to be discussed under this gender and law perspective. Nevertheless, law as a social institution dominated by men is a reflection of social power. जितनी भी हम लॉ की बात करें, बट हमको ये भी एक फैक्ट है विच वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड दैट लॉ जो है अपने आप में रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है. इट इज ऑल्सो शोइंग सम ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द सोशल पावर, क्योंकि लॉ का जो कहते हैं, लॉ इज कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी, लॉ लिव्स विद द सोसाइटी, लॉ एंगेजेस इटसेल्फ इन द सोसाइटी. सो जो भी कुछ आ रहा है वो सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंगली आता है, बिकॉज लॉ कैन प्ले द रोल्स ऑफ बोथ.
it can restrict as well as it can enable the gender equality. So law which is intended to apply equally to all the persons, that may often results in discrimination to women against. And therefore, the gender perspectives are necessary to empower the women by influencing these institutions, social power, social institutions. And there are basically many laws at the international and national level that may result into equality. अब हम equality की बात करेंगे कि वो कौन से laws हैं जो बने हुए हैं और जो equal treatment दे रहे हैं gender को, because gender is basically a socio-cultural term which contains in itself the socially ascribed roles, as I told you, the behaviors and which is given in the society. And women, as I discussed with you, that she's also facing different types of the problems throughout her life cycles. So from the legal perspective, equality in law becomes very, very crucial, very essential for the gender equality. अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो चाहे वो उनके रोल्स जो एट्रीब्यूट किए गए हैं बिकॉज ऑफ द सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, और जो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ द वायलेंसेस जो हमने डिस्कस किया उस टर्म में, जो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल अगर एक वुमेन फेस करती है तो उसको हम कैसे मीट आउट करें. सो वी फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट लीगल पर्सपेक्टिव्स, देयर आर डिफरेंट लॉज which are very important, which are essential, which gives the gender equality. And this gender equality refers to equality in status and a role of women in the society. So there are 2 points of the discussion. One, equality in status, कि एक तो समाज में जहां वो रह रहे हैं उनको परिस्थिति की एक समानता समता मिल जाए, और दूसरा जो है कि उनका वुमेन का सोसाइटी में क्या रोल है उस पर भी अगर इक्वालिटी की बात की जाए. So then we find that this concept of gender equality or gender and law would be gender responsive, because the laws which addresses that the strategic needs of the women, that are very, very important. And because this implies the enactment of the laws that confirms and that affirms you the gender equality, because it's a principle that guarantee the gender equality in practice. अगर law बना हुआ है तो at least we have something that the law is there which is providing the gender equality. If there is any violation of that law, one can directly move to the court of law. So this includes ensuring the protection of women and the girls from discrimination and from any form of violence or any form of abuse that affects the women, that is disproportionately. So for that, law is very important, and for that, gender responsive laws are important for ensuring gender equality and for the advancement of women. So to ensure the equality, the laws are made which are available to women. If we talk about in Indian perspective, these laws can be classified in 3 parts. For example, any question? Any question from your side? So first, we'll be looking the human rights. Second, the constitutional rights, and third, the legal or statutory rights. So if we talk about the human rights, then human rights are those rights which are available to every human being. When I'm talking about the human being, then it is not dividing or discriminating between any gender. A human being is a human being which may be either first gender, second gender, third gender, or whatever. So human rights are those rights which are available to every human being, and women is a human being. This needs no further clarification. So starting from this 1989 UN Charter, if we find that India is also a signatory to this UN Charter that guarantees the
every child 4 basic rights. 1989 UN Charter, which is related to the children also, that is giving 4 important rights. First, the right to survival. That is right to life, right to health, right to nutrition, right to name, right to nationality, सर्वाइवल. जैसा मैंने कहा ना, एक हाईटेक सेक्सिज्म आ गया, उसके द्वारा वोम में ही बच्चे का जो सेक्स है उसको डिटरमिन कर लिया गया है. इफ इट इज फाउंड टू बी फीमेल फेटस, देन इट हैज टू बी किल्ड, इट हैज टू बी अबॉर्टेड. तो राइट टू सर्वाइवल, पैदा होने का अधिकार, कम से कम शुरुआत तो हो. So this is the first right which is available. Right to life, right to, which is related with the right to health also. Nutritious खाना भी मिले, उसको नाम भी रखा जाए बच्चे का, और उसकी nationality भी fix हो. So right to survival is the first right which is available by this charter of 1989. Then the second right which is available to the child is the right to protection. Protection from what? सुरक्षा किससे मिलनी चाहिए? So that protection is from the exploitation. किसी भी तरीके का अगर शोषण हो रहा है, abuse, protection from abuse, protection from neglect. कि लड़की है तो उसको बाद में खाना देंगे, लड़का है तो पहले देंगे, ये पहले बहुत चलता था. अभी धीरे धीरे we find that after coming all these laws and the awareness also, the parents are getting aware more and more, but still there are few families where you'll find that this type of the discrimination is still prevalent. So if there is any exploitation, if there is any abuse with the girl child, if there is any neglect of the girl child, then the second right which has been made available by this international charter, UN charter, that is right to protection. Protection उसको दिया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए. Then right to development. So पहला सर्वाइवल, पैदा होने का अधिकार दे दिया गया. दूसरा, उसको नेग्लेक्ट ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें. तीसरा, उसी से जुड़ा हुआ जो एक लिंक्ड राइट था, दैट इज राइट टू डेवलपमेंट. Right to development means that the full development of the personality, the full development of the person, that relates with the education right, that relates with the care of the person concerned, that relates to the leisure rights, recreation rights, the cultural activities and all that. कि जहां जहां जिस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है. आज की डेट में अगर आप देखें, डेवलपमेंट में education is not the only thing through which one can develop. There are other cultural activities, recreation and other things also. कितने एक जो कहते हैं ना रियलिटी शोज हो रहे हैं. अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, if one wants to become a good dancer, a good singer, then allow them, get them develop in that particular field. So this is a right to development, that is education, care, leisure, recreation, as well as the cultural activities. That is another right which is given in 1990. Yes, please, Rekha Gupta. You have some question, you have raised the hand. रेखा गुप्ता जी हैं यहाँ पर, इन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना चाहती. If she want to ask something. Shall I continue? Yeah, madam. Yes, madam. It was by mistake. No problem. No problem. No problem. So, right to development is a right which is available to every child by 1989 UN Charter. And the last right that I have given you, that there are 4 rights which have been given: survival, protection, development. And the last right that is related to this UN Charter is the right to participate, the participation right. So where to participate? Participation just to express yourself. Participation to get more and more information. Participation to develop your thoughts. Participation in the religious activities. Participation in decision making part. तो participation कहाँ पर? कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. लोग बैठे हुए हैं, नहीं वो लड़की है या वो महिला है, उसको बात करने का अधिकार नहीं है, तो एटलीस्ट वन शुड बी गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट, टू एक्सप्रेस हरसेल्फ. एंड उसके साथ ही साथ वो किस थॉट को बिलीव करती है, उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको
घर में कोई अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो this right is very important. So once you are developing yourself, then the next right which is available, that is right to participation. If you see that relating to this participation in decision making is very important. So how many of the working women even can say that they are being given this right to participation even if they are earning and they are in the government institutions, they are the government employees. So this decision making is very important. जो decision making की बात है वो अपने आप में बहुत important है. केवल ये बता देने से कि आज रात का मेन्यू ये रहेगा वही decision making नहीं है. कहाँ प्रॉपर्टी ली जाएगी, क्या पढ़ा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा बच्चे को, या किस तरीके की चीजों पे अपने डिसीजन देने हैं. These are also very important. These are the right to participation. So if these four rights, survival, protection, development, and participation, are made available to a child during the development of the child, from the child to the full-fledged youth, then you'll find that these are important rights which can give the equality to enjoy the status and to play the role of the women in the society. So United Nations has this standing mandate on the equality. It has a standing mandate on the non-discrimination, and also one of the central duty which is to promote and encourage the respect for human rights. तो ये ह्यूमन राइट्स की रिजीम में अगर हम बात करते हैं तो ये चार राइट्स बेसिक हैं जो हर किसी को प्राप्त हैं, बच्चे को, हर बच्चे को. नाउ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. एज आई टोल्ड यू, जेंडर इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू वुमेन. इट इज नॉट कन्फाइंड टू द बाइनरी सेक्शन मेल एंड फीमेल. इट इज आल्सो इंक्लूडिंग अदर spectrum also. So you see that these are the rights which are available to everyone who is taking birth, and after that the survival and डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, चार्टर ऑफ 1945, द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, जो उसका पहला ही आर्टिकल है, दैट सेट आउट द कोर पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशंस को बनाया ही क्यों गया. So this is just to promote and encourage the respect for human rights and freedom, fundamental freedom for all. फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, जब हम ऑल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वही अपने आप में सफिशिएंट था, बट एज एन अबंडेंट कॉशन यू सी द provision is not stopped here. It continues to say that without distinction as to race, caste, language or religion. Charge to promote and encourage the and respect the human rights and fundamental freedoms. कि human rights को और fundamental freedoms जो हैं for all, हर किसी का ये प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव था, इसको जो पर्पस था यूनाइटेड नेशंस का. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फ्रीडम्स हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, इनके लिए जो रेस्पेक्ट है, ये बिना किसी डिस्टिंक्शन डिस्क्रिमिनेशन के होंगी. और वो जो ग्राउंड्स बताए उसमें सेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड. रेस, लैंग्वेज, रिलीजन तो है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की बात है इसलिए रिलीजन, लैंग्वेज और रेस भी आएगा, लेकिन सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो you see the very first article of this United Nations Charter of 1945 that promotes and that encourages the respect for human rights for all without any discrimination on the basis of blah 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 sex also, and it is also to promote and respect your fundamental freedoms. तो जब fundamental freedoms और human rights की बात आती है, then human rights always speaks about the equality. Then after this United Nations Charter of 1949, very important document which is the human rights of declared under the Universal Declaration of Human Rights 1948. अगर हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो वो 1948 का जो UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज नोन एज द बाइबल ऑफ ह्यूमन राइट्स. वो एक डिक्लेरेशन है, वो बाइंडिंग किसी पे नहीं है, बट दैट इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन ऑल द कंट्रीज दैट दे एक्सेप्ट दैट UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
as one of the significant and important document, and on that basis they have developed their domestic laws, their municipal laws. जो हमारे internal countries के law होते हैं उनको भी उन UDHR में जो ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया है उनके प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया है हमारे यहाँ अपने कानूनों में. सो द वेरी प्रीएम्बल, जो उसकी पहली उद्देशिका जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, दैट रिकॉग्नाइजेस द इनहेरेंट डिग्निटी एंड equal and inalienable rights, the equal rights of men and women that are the foundation of freedom, that is the foundation of justice, that is the foundation of the peace in the world. कि अगर आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, आप जो एक इनहेरेंट डिग्निटी की बात करते हैं एंड इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, दैट इज सेड टू बी द फाउंडेशन. फाउंडेशन किस चीज की? एक इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे पीस की, जस्टिस की और फ्रीडम की. सो this is for all the members of the human family, and very importantly article 1 of the UDHR also declares that all the human beings are born free and they are equal in dignity and rights. हर कोई जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, all the human beings are born free, हर कोई स्वतंत्र पैदा हुआ है, and they are equal in their dignity, they are equal in their rights. उनके जो राइट्स हैं, जो उनकी अपनी एक गरिमा मर्यादा है, उसमें वो इक्वल है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. सो Article 1 is very important of the Universal Declaration of Human Rights, which says that there cannot be any discrimination, there shall be equality. And besides Article 1, there are many other provisions in the Universal Declaration of Human Rights that speaks about the equality. And these are the provisions which have found place in many of the constitutions of the world, including our own Constitution of India. हमारे जो भारत का संविधान है उसमें भी इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के बहुत सारे जो राइट्स हैं उनको हमने अपने यहाँ एज ए फंडामेंटल राइट, एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपने यहाँ हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है. सो दीज आर राइट्स विच आर अवेलेबल in the Universal Declaration of Human Rights. उसका Article 7 है, अगर हम उसकी बात करते हैं, then it speaks of the equality before law, equal protection of the law. जब हम specific law की बात करते हैं, then CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, एक 1979 का एक कन्वेंशन था जिसको कि महिलाओं के लिए इट्स नोन एज द बाइबल ऑफ द वुमेन राइट्स, और इसको 1979 में कन्वेंशन बनी थी, और इट इज इम्पोर्टेंट दैट इंडिया हैज रेटिफाइड इट ओनली इन 1993. इसको आने के बहुत सालों के बाद इंडिया ने इसको रेटिफाई किया. सो नाउ वी आर द पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन, and this is to ensure the principles of equality of rights and respect and human dignity on equal terms with men and women in all the spheres, whether it's a political sphere or it's a social life of the women concerned, say economic life, cultural life in their country. So CEDAW जो है, CEDAW के accordingly आज की डेट में हर महिला को उसको पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में और उसकी कल्चरल लाइफ में इक्वालिटी की बात कही गई है. इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट द मैन इज गेटिंग, द वुमेन विल आल्सो गेट द सेम. सो CEDAW that has conferred this equality, and it says that in Article 1 that discrimination against women, it should not be there. And it is explaining the term discrimination. कि discrimination हम कहेंगे किसको? हम अगर simple terms में कहें discrimination की भेदभाव कर दिया हमारे साथ. So it is giving 3 aspects of discrimination. One, that discrimination may be any distinction made on the basis of sex. कि अगर कोई किसी तरीके का कोई distinction create कर दिया गया है तो वो discrimination है. This discrimination is also exclusion which is made on the basis of sex. कि बाहर कर दिया कि वो सेक्स का है तो हमारा वो इसका पार्ट हो ही नहीं सकता किसी भी डिसीजन मेकिंग का या किसी एजुकेशन पॉलिसी का या एम्प्लॉयमेंट का. लाइक देखिए इंडियन इसमें सर्विसेज में जो नेवी सर्विसेज हैं या एयरपोर्ट सर्विसेज हैं, on the basis of sex the women are not allowed for permanent commission. तो ये इस तरीके से क्या एक्सक्लूजन कर दिया कि कुछ ऐसे पद हैं जहां महिलाएं जा ही नहीं सकती. सो दिस इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेशन.
So that is a part that is not a part of the CEDAW, and if it happens, then it would be considered to be discriminatory behavior against the women. And the third is the restriction, which is made on the basis of सेक्स कि अगर किसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रोक दिया गया, एक तो एक्सक्लूड कर दिया है, किसी को रोक दिया कि नहीं आपका ये सेक्स इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते, जैसे कि कुछ उसमें एज ग्रुप भी हो सकता है, सबरीमाला का सुना होगा, जो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस भी डिसाइड किया गया, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, दे विल नॉट बी एंटरिंग द टेम्पल, so based on the religious ground, but restriction like this may be there. So in CEDAW, you see this discrimination against women is explained in three terms. The discrimination may be a distinction, discrimination may be exclusion, and discrimination may be restriction. And this should be based on the basis of sex. Then only it will be considered as the discrimination. तभी इसको discrimination माना जाएगा. So this discrimination which has impaired or which has nullified the recognition or enjoyment of the exercise by women on the basis of the equality of men and women, their marital status in any field, whether it is political, it is economic, social, cultural, civil, or any other forms of the discrimination is there, that will violate their human rights. कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, किसी भी फील्ड में किया जा रहा है, उनके घरेलू परिस्थिति में किया जा रहा है, उनके मैरिटल स्टेटस को लेके किया जा रहा है, then this all will be covered under the discrimination against the women. It may be related to the right to work also, कि उसका जो right to work है उसको अगर free choice नहीं मिल रही है, किस प्रोफेशन में जाना चाहती है, कौन सा एम्प्लॉयमेंट लेना चाहती है, उसकी जो पेड लीव्स होनी चाहिए हैं वो नहीं दी जा रही हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा है, और उसकी हेल्थ को लेके, उसकी सेफ्टी को लेके जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है. So all these rights have been addressed in this CEDAW for the women, and if there is anything which is against these rights, that would be called the discrimination, that has to be eliminated. तो उसको जो eliminate करना है, उसके measures क्या होंगे वो भी इसी CEDAW में दिए गए हैं कि वो किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन किया जा रहा है किसी भी मैटर से रिलेटेड, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, फैमिली रिलेशन से रिलेटेड हो, उसकी फ्री एंड फुल जो कंसेंट दी जाती है मैरिज में उससे रिलेटेड हो, राइट्स के रिलेटेड हो कि जो स्पाउस है, हस्बैंड को राइट है, वाइफ को नहीं है, तो उससे रिलेटेड हो, इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है, या एंजॉयमेंट से रिलेटेड कोई राइट्स हो सकते हैं. सो इफ दीज आर द डिस्पैरिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशंस, दीज आर ऑल टू बी प्रोहिबिटेड in this particular convention which has come in 1979, and India has become the party in 1993. Then there are many other declarations which are specifically protecting the rights of the women, which are basically looking into the matter of gender equality. Gender equality as a drive. Like 1995 Beijing Declaration was there. Because that was relating to the gender equality. Then there are some European conventions, there are some American conventions, because at regional level also अगर आप देखें तो वहां पर भी इस तरीके के ह्यूमन राइट्स को लेके, ह्यूमन एंड पीपुल्स को लेके अरब चार्टर है, वहां पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कन्वेंशंस बने हुए हैं इक्वल रेम्यूनरेशन को लेके, जो एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन में अगर किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेके जो कन्वेंशंस हैं वो सब बने हुए हैं. और अभी लेटेस्टली अगर आप देखें तो जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको कि 2023 तक हम सबको अचीव भी करना है, उसका एक एजेंडा जो गोल नंबर 5 है, दैट स्पेसिफिकली स्पीक्स अबाउट द जेंडर इक्वालिटी. So in that gender equality, to achieve gender equality and to empower all women and girls, this is the main goal which has to be achieved. So how it has to be enforced at the global level as a global drive, and to achieve the gender equality and to empower the women, this is all we have to participate in that, and we have to look into the
thinks that international level, there are many conventions, declarations, human rights charters, not only from the United Nations, but from the regional level also. As I told you, Arab, America, Africa, and so many other regional charters are there, which speaks about the human rights of the women, which speaks about the human rights of gender equality, which speaks about the there shall be no discrimination based on the sex. तो ये सारे जो हमारे पास कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए we have so many laws. So next I'll be discussing with you what are the laws which are related to the gender in India, constitutional statutory rights and judicial precedents along with the latest issues. So up till now, whatever I have discussed with you, if there is any question, you are most welcome. अगर आपको कोई क्वेश्चन है दिमाग में आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं. Hello. Hello, madam. जी. Am I audible? Yes, yes. If you make it not a question, I was observing one thing that in our previous session also, madam has mentioned about the misconception related to the gender. Gender is not associated with women, but while we are discussing about the gender issues, then maximum time we are discussing about the women issues. So that's why this thing is coming to my mind. That this misconception actually it's not it's हम सब वो यूज करते हुए इसीलिए ये misconception हमारे पास है. Gender is associated with women. So this thing I am just observing for the session. Yes, you are very correct. And when I started talking with you, I have said that gender is not confined in the binary relation, that is the male and female, है ना. ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि आज की डेट में हम फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर और थर्ड जेंडर हम सबकी बात कर रहे हैं. और लेकिन एक जो कंसेप्शन है, ये एक जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन बना हुआ है जहां पर हम हैं, वहां पर परसेप्शन क्या है, जेंडर इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड विद दी वुमेन. तो जो भी लॉज बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, दीज आर ऑल बेसिकली confirming that protecting or respecting the gender equality in terms of the male and female. That female is mostly discriminated, and that's why to bring the equality, we are talking of the gender. As I told you that gender is a social construct, sex is a biological construct. तो जब आप इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स को या नेशनल डॉक्यूमेंट्स को भी आप देखते हैं, तो जब अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड, तो वहां पे जेंडर नहीं लिखा होता है, वहां पे क्या लिखा होता है, सेक्स. As I have just given you the example of the United Nations Charter, when they say that the purpose of this United Nation is just to protect and respect the human rights and fundamental freedoms of all. I have emphasized and enforced this word all. जब हम all कहते हैं तो वहां पे हम gender disparity की बात नहीं कर रहे हैं, but उन्होंने उसको साथ में कंटिन्यू किया without discrimination on the ground of sex, race, language and religion भी कहा, लेकिन sex कहा. So that sex here simply means that it may be from any gender. Sex is not confined to women's sex. Sex is not confined to male sex. It's not confined to LGBT group. Sex is overall concept. It's a biological concept. And that biological concept is changing now. Because at a particular point, because sex may be a natal sex. जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय उसका sex कुछ और है, natal sex. लेकिन बाद में when one thinks that now he is not going through with that particular sex which has been given at the time of birth, and wants to change that, then intersex is there, transsexuals are there are so many other things. The natal sex may be changed at any point of time. So gender
here when we talk, because there is a misconception basically, and that misconception is based on the perception. जो एक परसेप्शन है ना हमारा, वो परसेप्शन सिर्फ जेंडर को वुमेन के ही लेंस में देखता है. So this gender is being seen from the lens of a women inequality, while this inequality is being committed against the third gender also. So now very little we have started to speak on their rights also. But earlier there was nothing to speak about. जो कुछ भी है कमरे के अंदर है, बंद है, किसी को कहने में भी शर्म आती थी. बच्चा अगर ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है तो उसको उठा के ले जाते थे. So these are the things. But now you see, because of the human rights issues, because of the various NGOs, they are coming into picture, because of the rights societies and the judicial decisions also. They are also getting their own rights. They have been now recognized as a third gender entity. So we find that in that respect, if we see that this gender misconception is not to be misperceived, it has to be based on the correct perception, and that correct perception is now coming up. So अब धीरे धीरे आ रहा है और उसको हम देख रहे हैं कि उनको राइट्स की भी बात हो रही है, and to the extent now they are claiming for the same sex marriages also. अभी तो राइट्स में था, एम्प्लॉयमेंट में राइट मिल रहा है, एजुकेशन में राइट मिल रहा है, अदरवाइज उनको राइट्स मिल रहे हैं. दे आर स्टार्टेड लिविंग विद देयर ओन फैमिली, अब वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं. दे आर कमिंग अप विद ओपन हैंडेड, उनको उस तरीके से लिया जा रहा है. So now the next is of the marriage also. So these are all the things which are related to the human being, and that human being may be of any sex. Human rights की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी के भी हो सकता है, because by virtue of being born in the human